स्टूडेंट टाइप स्मार्ट काम करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। Hey guys, welcome to Manoeuvre. I'm Advocate Nisha Lotia, and in my today's session we will discuss the 30-day strategy. Guys, please listen to me carefully. The 30-day strategy which will boost your score for your MH Law CET both 3 years and 5 years. 30 days is more than enough. If you follow my timetable religiously, I'm sure you can come out with flying colors, guys. I appear exams every year, so I am 100% sure that if you follow my strategy, you will definitely come out with flying colors. Now guys, मेरे जो students हैं जो appear करते हैं exams के लिए, उन लोग they guarantee me कि मैम 90 to 92% score तो आ ही जाएगा मेरे legal aptitude section में, because the logic is very simple. If your concepts are clear, guys, if your concepts are clear, then there is nothing that will stop you. Okay, आपको कोई भी आंसर को मेमोराइज नहीं करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज अंडरस्टैंड द लॉजिक. यू आर नॉट द लॉयर्स येट, so they cannot test you to that level. They are mentioning the principle. They will mention the principle and you have to just apply the principle to the given facts. Now the major constraint what I see over here is the reading constraint. Okay, अगर आपका रीडिंग ठीक नहीं है, इफ योर रीडिंग इज नॉट दैट गुड, तो क्या होगा, आप एक क्वेश्चन के पीछे टाइम ज्यादा ले सकते हो, बिकॉज आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियसली नहीं होगा. अगर आपका रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एक साथ नहीं है, तो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन कैन टेक अवे लॉट्स ऑफ टाइम फ्रॉम यू. सो दैट इज नॉट परमिसिबल व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम, गाइस. सो हियर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर डेज के साथ, जो मेरा आपने लिखा होगा कि ये सब्जेक्ट आपको करना है. एंड इफ यू फॉलो दैट रिलीजियसली, आई एम 100% श्योर दैट यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. Okay guys, so day 1, okay, when you're starting, this is your 30-day strategy plan. So day 1 for the legal aptitude section, whether it is your 3 years or your 5 years, दोनों के लिए आपका टाइम टेबल सेम रहेगा. So day 1 आपको you have to start with your law of contract. Why law of contract? Because first of all you can relate to this. Okay, law of contract is very easy. You can easily relate to it and it is the maximum scorer. इसमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा नंबर्स के आते हैं आपको और इसके आंसर्स भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कंपल्सरी टॉपिक विच यू हैव टू डू. यू कैन नॉट चूज टू ओमिट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, and secondly it is very easy. Now the topics like the offer, proposal, invitation to offer, types of contracts, then the valid contracts, voidable contracts, void contracts, these are the topics which is the must do topics. You cannot avoid them. So on the day 1 you will be covering half of the portion of your contract, and on the day 2 you will be covering the other half portion, and on the day 3, okay, on the day 3 you are gonna do the lots and lots of questions, okay, which can be either based your principle and facts based questions, or they can be even your assertion and reasoning based questions, but principle and facts को आपको ज़्यादा importance देना रहेगा. Now guys, this is the pattern. If you follow the first 2 days, if you're understanding the concept, and on the third day if you're answering, doing the question answers, अगर आपके पास Manoeuvre का बुक है तो Manoeuvre के बुक के पीछे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. एंड इफ यू हैव परचेज्ड अवर प्रोग्राम, तो मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं. ओके, सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने जो कंसेप्ट, आपने जो फर्स्ट और सेकेंड डे पे जो कंसेप्ट आपने जो पढ़े हैं, उसको एक्चुअली कैसे अप्लाई करना है वो आपको थर्ड डे पे पता चलेगा. सो थर्ड डे इज अ काइंड ऑफ अ रिविजन व्हाट यू हैव डन ऑन योर फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो फर्स्ट 3 डे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज वेरी एकदम ईजी टॉपिक है. आप डे टू डे आपके ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट कर पाओगे उसको. एंड इफ यू आर परचेजिंग अवर प्रोडक्ट, तो मैंने हर एक चीज के लिए हर एक एग्जाम्पल दिया है, विच बिकम्स वेरी easy to understand. So law of contract, again, very simple, very easy, but bit lengthy and but scoring. Okay, so that was contract which you can get your target achieved in 3 days. Okay, on the fourth day,
Guys, on the fourth day you have to start with the law of torts. Okay, now torts is the second important topic after your law of contract. ओके सो लॉ ऑफ टॉर्ट में सबसे ज्यादा हैवी वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट इज नथिंग बट इट इज योर सिविल रॉन्ग. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी इज लॉ ऑफ टॉर्ट. Cases like defamation and all that are very important when it comes to torts. And secondly, there are maxims like damnum sine injuria, injuria sine damnum. आपको compensation कब मिलता है, कब नहीं मिलता है. All the liabilities, your vicarious liability, strict liability, absolute liability, all these are very very important topics. Let me be very clear with you, law of torts के topic बहुत ही limited है. ओके सो मेक इट अ पॉइंट कि आप कोई भी टॉपिक को ऑप्शन में नहीं डाल रहे हो. सी टू इट कि आप लॉ ऑफ टॉर्ट का जो पोर्शन है, जो जिस भी मेंटर को आप फॉलो करते हो, ट्रस्ट दैट मेंटर प्रॉपरली. एंड गाइज, डू नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक ऑन द ऑप्शंस. व्हाई? बिकॉज टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसमें अगर इफ यू आर डूइंग 100% ऑफ द टॉपिक्स तो यू माइट बी कवरिंग 80% ऑफ योर टॉर्ट्स में. जो मैं आपको बोल रही हूँ 6 से 7 मार्क्स का आएगा, तो वो पूरा 80% कवर हो जाता है आपका जो पोर्शन है. सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मेक इट अ पॉइंट दैट आप कोई भी चीज ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ रहे हो. ओके, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स अगेन यू नीड द फोर्थ डे you're gonna study the 50% of the torts, and on the fifth day the other 50% of the torts, because and the rest of the day you can utilize for your other subjects also, guys. And on the sixth day again you're gonna study the maximum questions and answers you can get through. आपके पास जो भी मटेरियल है, आप जिस किसी कोर्स बुक को फॉलो कर रहे हो, आप जिस किसी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, उसमें से सारे, अगर आप मैनूवर कर रहे हो तो मैनूवर के बुक्स के टॉट में बहुत सारे प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चंस है, वो सारे आपको गो थ्रू करना है. सो बाय द टाइम आप मॉक्स पे जाओगे तब तक आपका टॉट्स बहुत ही क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लॉ ऑफ टॉट्स विल बी टेकिंग योर अनदर 3 days, करेक्ट. The next in the line is my Indian Penal Code, that is nothing but your IPC, which is relating to all your offenses. Okay, all your offenses like आपका murder है, आपका rape है, आपका theft है, all those things are covered under Indian Penal Code. This Indian Penal Code can be done in 2 days only, guys. 7th and 8th day. Okay, 8th day का the first 7 day you're gonna cover almost 70% of your Indian Penal Code, guys. Because why I'm telling you this will become quick is because आपने जो first 6 days when you have given it to the legal thing तो क्या होगा कि आपका language पे command बहुत अच्छा हो गया होगा. So that will help you a lot to understand the legal language which is written for the Indian Penal Code. So Indian Penal Code में आपको सिर्फ offenses समझने हैं. How theft is different from misappropriation, how misappropriation is different from breaking the trust. So all those things, so those the minor things you have to understand. So I think the 2 days are more than enough. First day पे आपको 70% आपका Indian Penal Code cover करना है, and on the next day the rest of the 30%, and as usual all the questions and answers. So within 2 days I'm sure you can cover your IPC. Okay guys, so this is the way you have to follow. Next in the line is your constitution. Constitution again needs 3 days, because on the 9th day, okay, on the 9th day when you're starting the constitution, guys, you will be doing the first half thing, that is the constitution, what are the pillars, what are the basic structure of constitution. You will be understanding what is Keshavanand Bharati's case the entirely. Then you will be understanding the fundamental duties. You will be understanding your DPSP, that is your directive principles of state policy, your fundamental rights. पहले दिन आपको सिर्फ इतना करना है, and the next day you can go on to the the rights and duties of the president, the prime minister, the governors, all those things. So next day आपको वो करना है, सबके 10 years लोकसभा members के, राज्यसभा members के, उसके age limit क्या होते हैं, how do they take the oath and everything. That can be covered on the 10th day. So जितना आप bifurcate करके पढ़ोगे, जितना आप sorted पढ़ोगे, तो आपका है ना इतना से अच्छा आपका मगअप हो जाएगा.
And on the 11th day you're gonna study all the question answers, okay, whichever material you're following. So वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली वो रिविजन हो जाएगा. एंड इन द यू विल कम टू नो कि आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आपको अप्लाई करना है. एंड एग्जाम्स में देयर आर चांसेस दैट यू माइट बी गेटिंग द सेम क्वेश्चंस. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑल्सो कवर्स योर स्टैटिक जीके. ओके, ये आपका स्टैटिक जीके भी कवर करेगा. So constitution, please do not think of, missing it out. Constitution is very, very important. Now, on the 12th day, we're going to do the miscellaneous part, that is your IPR. IPR is nothing but your intellectual property, which deals with your trademark, copyright and patents, okay? They deal with your trademark, copyrights and patents. As we are seeing, the world is moving very fast, okay? Because of this pandemic, everything has become online. So this trademark, copyright and patent has become very much in the market. So thereby it has gained lot of weightage nowadays. Next is the Partnership Act, okay, followed by LLP, that is the Limited Liability Act, okay. And other is the legal maxim. Whichever mentor you're following, ask them to mark certain maxims for you, okay, and which are very important for your examination point of view and which will help. So आपको क्या करना है, ये 12th डे, ये 14th डे से आपको 25th डे तक आपको डेली मैक्सिम्स पढ़ने हैं. ओके, यू हैव टू जस्ट गेट यूज टू दैट लैंग्वेज. आपको कोई चीज मगअप नहीं करना, आपको बस डेली पढ़ना है. एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे, देन यू विल कम टू नो विद द फ्लो ऑफ इट. Okay, so this is the way. I am 100% sure, if any of the student is following this much, then they will come out with flying colors. Okay, so next in the line is on the day 15th, there is going to be the entire revision. Now revision में, if you feel that you are weak on to the constitution, or you are weak with the say intellectual property, और आपको contract का कोई part नहीं समझा होगा, so on that day you have to just go through the books and just go through the revision. आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो. आपको जहाँ पे आपको लगा आपका वीक एरिया है उसको थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दे दो. बाय द 15th डे आपका क्लियर हो जाना चाहिए. From the 16th day, this comes the crucial part of my preparation. इस आपका क्या शुरू हो जाएगा, आपका मॉक्स शुरू हो जाना चाहिए. मॉक्स आपका क्या होता है बॉयज गाइस, ये मॉक्स जो होता है ना, ये आपका एग्जामिनेशन का रेप्लिका होता है. what types of questions you will encounter, how much time you are allotting to one question, आप कैसे time management करोगे, आपका reading capacity क्या है, आपका कितने marks का आप appear कर पा रहे हो आपको given time में. So this all can be cleared on the mocks. Now mocks देना एक बात होता है guys, and mocks को analyze करना is a different story. So अगर आप mocks दे रहे हो तो आपका जो level है वो यहाँ तक का है, okay? बट अगर जैसे द मिनट यू एनालाइज योर मॉक्स, ओके, और अगर मिनट यू एनालाइज योर मॉक्स गाइज, तो आपका लेवल ना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. सो मॉक्स टू बाय मॉक्स, एक मॉक के बाद दूसरा मॉक, दूसरे मॉक के बाद तीसरा मॉक्स. वंस यू स्टार्टेड अपियरिंग फॉर मॉक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका है ना ग्राफ डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग पोस्ड एट द एंट्रेंस लेवल गाइज. सो अगर आपका ग्राफ फर्स्ट दिन पे इतना है तो सेकेंड डे पे इतना होगा, थर्ड डे पे इतना होगा, एंड फोर्थ डे पे इतना होगा. एंड गाइज अगर आपके मैनूवर के मॉक्स में अगर आपको जो भी मार्क्स मिल रहे हैं ना, उससे आपको 10 to 15% ज़्यादा आपको रियल एग्जाम्स में मिलते हैं, ओके, बिकॉज मैनूवर के मॉक्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है. And then your regular exams guys, I am guaranteeing you that on the day 16th and the 17th and 18th, अगर आप या आपके 20th डे पे जो आपका मॉक होगा, जो विच विल बी अपीयरिंग योर 5th मॉक गाइज, आपका स्कोर पहले मॉक से एकदम ही डिफरेंट होगा. इट विल बी रियली द लेवल विल बी रियली हाई ऑफ योर स्कोर. एंड इफ यू आर अपीयरिंग द 10 मॉक्स, आई एम श्योर on the 25th day you will be very much aware what is your weak area guys, and you will be confident about the strong area. ये आपका इतना अच्छा सॉर्ट हो गया होगा कि आपको है ना आपके लास्ट मोमेंट में कौन से एरियाज में आपको वर्कआउट करना है, एंड विच इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे आप फटाफट पढ़ाई करके फटाफट रीडिंग करके फटाफट आंसर दे पाओगे. ये पूरा सेक्शन आपको एकदम से क्लियर होगा. बट गाइज, keep in your mind, you have to follow this religiously,
Okay, now this is a 30-day strategy, but like if you're not keeping well for a single day, or या आपके कोई दूसरे टॉपिक पे आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पे कर रहे हो, so I have given you 4 to 5 days of grace also. Okay, I am sure guys, if you're doing this, as I'm appearing papers every year, and if you're buying our program, and if you have a correct content with this plan, you will come out with 90 to 92% in your legal aptitude section, guys. Okay, now to boost up my this preparation, I have also set some do's and don'ts for you guys, which you have to follow to come out good in your examinations, guys. First thing is nothing but your syllabus awareness. Very very important is your syllabus awareness. I always get calls from people asking me, students asking me कि मैडम इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, मैडम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, मैडम फैमिली लॉ पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है. अंडरस्टैंड वन थिंग, आप लोग अभी लॉयर्स नहीं बने हो. दे कैन नॉट टेस्ट यू ऑन एवरी पार्ट. ये जस्ट आपका इंटरेस्ट जानना है कि आपको कितना इंटरेस्ट है लॉ के फील्ड में, एंड आर यू फिट फॉर बिकमिंग अ लॉयर. बस यही टेस्ट करना है. सो दीज आर जस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट्स उन लोग ने ऑप्ट किए हैं आपके लिए. ओके, सो द सिलेबस अवेयरनेस, द राइट कंटेंट टू स्टडी फ्रॉम अ राइट मेंटर इज द फर्स्ट की. ओके, राइट कंटेंट बहुत ही जरूरी होता है. ओके, नेक्स्ट इज द रीडिंग प्रोफिशिएंसी. एवरी डे गाइज रीड न्यूज़पेपर्स. आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, न्यूज़पेपर मस्ट है, बिकॉज ये आपका करंट अफेयर्स का ध्यान रखेगा, आपकी रीडिंग एफिशिएंसी का ध्यान रखेगा, एंड आपकी जो स्पीड चाहिए रीडिंग में, विच विल अगेन इवन बूस्ट योर इंग्लिश स्कोर. ओके, सो ये भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इन द लाइन इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. व्हेन इट कम्स टू लीगल, आप कोई भी आंसर को गाइस, आप कोई भी आंसर को मेमोराइज नहीं कर पाओगे. आपको कंसेप्ट ही समझना है, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स होंगे, ओके गाइस, जो प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स होंगे ना, वो बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में. दे आर विल बी बेस्ड ऑन द डे टू डे लाइफ ट्रांजैक्शंस. सो एवरी फैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम विद द अदर. तो आपको प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट होगा तो ही होगा. I would advise everybody to understand any of the concept with the help of an example. अगर आप एग्जाम्पल के साथ समझते हो ना, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं. ओके, नेक्स्ट इन द लाइन इज अंडरस्टैंडिंग द लीगल टर्म्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर मैं आपको बोलती हूँ टॉर्ट्स है, अगर मैं आपको बोलती हूँ डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम है, अगर मैं आपको बोलती हूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं अगर आपको बोलती हूँ इन्विटेशन टू ऑफर है, ओके, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सारे टर्म्स के ना एक डेफिनाइट मीनिंग होते हैं जो आपको है ना एग्जाम्स के पहले समझने हैं. बिकॉज अंडरस्टैंड, 1 मिनट मिलता है आपको एक आंसर सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको इतना बड़ा प्रिंसिपल पढ़ना रहता है, फैक्ट्स पढ़ना रहता है, and then the 4 options guys, and in that if you do not understand the legal term what is mentioned, you think it will work out. No, so that is not advisable. Understand the legal terms properly, which is very very important for the legal aptitude section. The next in the line is appearing mocks. Very very important, because as I told you guys, आपको mocks के बगैर तो आपको पेपर देखने जाना ही नहीं है. Mocks are the replica. You will get used to with the system also. Okay, so they are the replica of what you're gonna appear on your D-Day. Analysis of the mocks तो जरूरी है, because thereby only आपका ग्राफ बढ़ेगा. वरना अगर आपका ग्राफ यहाँ पे तो स्टेगनेंट हो जाएगा. आपने मॉक्स दे दिया बट यू डोंट नो कि आपका आंसर राइट था या रॉन्ग था, सो दैट विल नॉट हेल्प यू. ऑलवेज एनालाइज, अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है. ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट. सो एनालिसिस ऑफ मॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आप डूज कर लेते हो तो आई एम श्योर nobody can stop you from scoring better. Now don'ts, very very important is this list of don'ts guys. Never go out of the principle mentioned. As I told you guys, you are not lawyers, okay, and they are testing your law ability, so they have mentioned a principle and your answer has to be mentioned बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली. अगर प्रिंसिपल आपको न्यूसेंस की बात कर रहा है तो आपका ट्रेसपास कभी आंसर हो ही नहीं सकता. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द प्रिंसिपल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट बॉक्स वेयर द प्रिंसिपल इज मेंशन्ड गाइज. नेक्स्ट इन द लाइन इज अवॉइड ऑल द नेगेटिव पीपल. जो बोलते हैं कि यार ये अपने बस की बात नहीं है, या इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा. अवॉइड ऑल द सोशल मीडिया गाइस, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका वेब सीरीज, एवरीथिंग कैन बी ऑन अ होल्ड. एवरीथिंग विल बी देयर इटसेल्फ. इवन यू आर कमिंग बैक आफ्टर अ मंथ,
दे आर देयर, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. बट ये CET एक बार निकल गया तो पूरा एक साल आपको वापस से वेट करना पड़ेगा गाइज. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्या लीगल है ना, ये तो हो जाएगा, ये पढ़ के करना है. नो, लीगल हो जाएगा बट व्हेन थिंग्स आर रिलीजियसली फॉलोड, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, जब आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें से किस बेस के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे क्वेश्चंस आपको पोज होते हैं. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पोस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज D-Day पे जो टाइम प्रेशर होएगा ना आप लोग पे स्टूडेंट्स, वो बहुत ही होगा. एंड देन अगर आप फिर आपका अंडरस्टैंडिंग वीक होगा ना, देन इट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल टर्न द टेबल्स गाइज. नेक्स्ट इज आई टोल्ड यू नेवर मेमोराइज द आंसर्स, बिकॉज आपने जो फैक्ट्स पढ़े वो शायद पॉजिटिव हो गए और एग्जाम में अगर नेगेटिव फैक्ट्स आएगा तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. सो इन लीगल नेवर एवर मेमोराइज एनी आंसर्स. व्हाट यू हैव टू मेमोराइज आर द सर्टन लीगल मैगजीन्स दैट यू नीड टू मेमोराइज. अदरवाइज always and always understand the concepts. Never feel demotivated guys, never think it's too late now, better late than never. And choose for the right content, choose for the right mentors, choose for the positive people, and I am sure you will come out with flying colors. Okay guys, so we here at Manoeuvre have the entire online program guys, which will be really helpful. We have the books, we have the mock test, we have the sectional course also. अगर आपको पूरा नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड वी हैव द एंटायर course also, and we have the live lectures going during this pandemic, so you don't need to come to our classroom. So we have the entire thing, we can help you the way you want, and the link has been mentioned in the description for the entire thing. For the online program guys, you have to call us up on 8828581455, or you can visit us at manoeuvre.edu.com law entrance. Okay guys, we are actually located at Borivali, Dadar, VASAI, and very shortly by God's grace we are coming to Pune also. Guys, be safe, study the right content, and all the best, and come out with flying colors. Thank you.